હાલમાં જ્યારે સમગ્ર ભારત દેશમાં 21મી પશુ વસ્તી ગણતરી ચાલી રહી છે તે અંતર્ગત આજ રોજ કેન્દ્રીય પશુ નિયામક કચ્છ જિલ્લાની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને તેમની મુલાકાતનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય એ જ હતો કે કોઈ પણ પશુપાલકના પશુ વસ્તી ગણતરીમાં ન રહી જાય તે અંતર્ગત સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન આપવા માટે આજ રોજ તેઓ કચ્છ આવી પહોંચ્યા હતા। આ ઉપરાંત તેઓએ બન્ની પચ્છમ સહિતના પશુપાલકો સાથે વાતચીત કરી હતી અને તેઓને પણ યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું હતું કે આપનું એક પણ પશુ વસ્તી ગણતરીમાં રહી ન જાય અને ખાસ કરીને જે સ્થળાંતરિત થતા માલધારીઓ છે તેમના પશુઓ પણ વસ્તી ગણતરીમાં સમાવી લેવામાં આવે તે હેતુસર આજ રોજ કચ્છ જિલ્લાની મુલાકાતે તેઓ આવ્યા હતા। ત્યારે આ વિશે વધુ માહિતી સાંભળીએ પશુપાલન વિભાગના નિયામક શ્રીના શબ્દોમાં। देखिए, हमारा जो विजिट का जो पर्पज है, हम लोग 21वीं पशुधन गणना स्टार्ट कर दिए हैं, जो 25 अक्टूबर से चालू करके ये 25 फरवरी 2025 अराउंड जो है हम 4 महीने की दौरान ये पूरे भारत में जो 36 स्टेट हैं और लगभग 784 डिस्ट्रिक्ट्स सभी जो है लगभग जो है 30 करोड़ हाउस होल्ड की गणना की जाएगी। उसमें 16 प्रजातियों की लगभग 220 जो है इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं और उसमें क्लास ब्रीड भी हैं, सभी को शामिल करते हुए इंक्लूडिंग जो है स्टे कैटल स्टे और एनिमल्स के भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा। कच्छ की विजिट का पर्पज मेरा ये है कि हम जो पशुधन गणना कर रहे हैं, जो इस गणना में पैस्टोलिस्ट को शामिल किया गया है, जो कि पिछली पशु गणना में शामिल नहीं किया गया था, उस समय उस गणना में ही शामिल था, लेकिन यहाँ पे हमने सेपरेट किया हुआ है। इस बार पैस्टोलिस्ट के बारे में एक डेटाबेस निकल के आएगा, उनके पास क्या एनिमल्स है। तो ये कच्छ में जो आज हमारे कच्छ के जो अधिकारी लोग हैं और जो सहजीवन ने मिलके इन जो पैस्टोलिस्ट को बुलाया गया है, जिससे अवेयरनेस जो है इनके लोगों तक पहुंचे और अपने फर्दर जो है लोगों में अवेयर करें कि पशु गणना के लिए सभी लोग अपना डेटा जो है दें, जिससे कि भारत सरकार इसके बारे में कुछ योजनाएं बनाने के लिए सहयोगी साबित होगा। और ये जो बन्नी है, जितने भी पैस्टोलिस्ट हैं हमारे गुजरात में या दूसरे स्टेट्स में, वो सभी को शामिल किया गया है। कोई एक स्पेसिफिक जो है हम पैस्टोलिस्ट की बात नहीं करते हैं, हम सभी पैस्टोलिस्ट को लेकर हम इस पर डेटा कलेक्ट करेंगे और आगे जो सरकार के पास जो डेटा आ जाएगा, जो उच्च अधिकारी के लेवल पे इसको जब समझ पुष्टि किया जाएगा, तो इसमें बेहतर योजना बनाने में ये कारगर होगा और राज्य सरकार के लिए भी कारगर है। नहीं, गणना तो अभी चालू ही है, गणना निकल के अभी ऐसा नहीं है कि गणना हमने आज शुरू की और कल बंद करके हमने डेटा को निकाल के हम एनालिसिस करें। डेटा आपको एनालिसिस करने के लिए जब गणना खत्म हो जाएगी, फरवरी में जब इसको हम क्लोज करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे किस तरह के कौन से जानवर किस स्टेट में क्या क्या हैं। उस समय हम इसकी एनालिसिस करेंगे, फिर हम डेटा को रिलीज करेंगे। तो आपको डेटा देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 4 महीने के बाद जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, देन हम इसकी एक की रिजल्ट समरी जारी करेंगे, जिसके माध्यम से राज्य सरकार के पास क्या क्या एनिमल है वो निकल के आपको आएगा। नहीं, ग्रामीण इलाके में जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि हम डेटा इसको ऑनलाइन मोड से कलेक्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फीचर्स है कि डेटा जो है सीधे हाउस होल्ड लेवल पे सीधे डेटाबेस में चला जाएगा, सर्वर जो होता है। और ऑफलाइन मोड में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो डेटा मोबाइल में डेटा कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जैसे सिस्टम ऑनलाइन में आएगा वो डेटा सीधे सर्वर में चला जाएगा। तो हम इसको ऑनलाइन से कलेक्ट करेंगे, इसको देखेंगे भी कि जो समस्याएं इसमें अभी आ रही थी वो समस्याओं का निदान हो गया नहीं हो गया। मेरे आने का पर्पज है कि फील्ड में डेटा कलेक्शन का तरीका ठीक से किया जा रहा कि नहीं जा रहा है, क्या इन्वर्टर को दिक्कत आ रही है, दिक्कत अगर कोई आ रही है तो उसको टेक्निकल टीम के साथ चर्चा करके तुरंत समाधान किया जाना है। डेटा कलेक्ट करने की जवाब यही है कि जो हमारे इन्यूमरेटर्स लोग जो हैं, जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, उन सबको काम में लगा के जो मैन पावर अभी कम अगर सरकार ने लिया है, जो उनको दिया गया है, लगभग हमने 4,400 के आसपास जो इन्वर्टर्स का सैंक्शन दिया है, लगभग अभी 3,600 रजिस्टर्ड किए गए हैं
क्योंकि इसके साथ ही हमारे राज्य सरकार के लोग वैक्सीनेशन का भी काम चलता है। मैन पावर एक बड़ी समस्या है, तो जो हमारे पास जो मैन पावर है उसको बढ़ाने के लिए भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे भी हो उसको बढ़ा के इसको निर्धारित समय सीमा में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। આજે કચ્છ જિલ્લામાં ભારત સરકારના માનનીય પશુપાલન નિયામક શ્રી જે ભારત સરકારનું તમામ અત્યારે 21મી પશુ ગણતરી ચાલી રહી છે તેમનું કેન્દ્રીય લેવલથી મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે માન્ય ડોક્ટર વીપી સિંઘ સર કચ્છ જિલ્લાની મુલાકાતે આવ્યા છે અને તેઓ શ્રી આજે કચ્છમાં જે વિચરતા માલધારીઓ છે કે એક જિલ્લામાંથી બીજા જિલ્લામાં જાય છે અને તેઓ આ 21મી પશુ વસ્તી ગણતરીમાં એમનું પશુ ક્યાં ગણતરીમાં છૂટી ન જાય એ રીતે જિલ્લાના તમામ વિચરતા માલધારીઓ સંગઠન, ઊંટ ઉછેર માલધારી સંગઠન, ઘેટા બકરા ઉછેર માલધારી સંગઠન, સૌરાષ્ટ્રના માલધારી સંગઠન સર્વે બંનેના પશુપાલકો સાથે સર્વે પશુપાલકોના સંગઠન સાથે સાહેબે ચર્ચા વિચારણા કરી અને માર્ગદર્શન આપેલ છે કે આવનારી પશુ વસ્તી ગણતરીમાં ખાસ કરીને વિચરતા સ્થળાંતરિત માલધારીઓના પશુઓ રહી ન જાય તે માટે સૂચન અને માર્ગદર્શન આપેલું છે। એ સાહેબનો મુખ્ય હેતુ હતો। ઘટ એટલે સ્ટાફની અત્યારે કચ્છ સમગ્ર જિલ્લામાં સારી કામગીરી કરી રહી છે પશુ વસ્તી ગણતરીમાં અને અમે મેક્સિમમ સ્ટાફને આ કાર્યક્રમમાં યુટિલાઇઝ કરી રહ્યા છીએ। કચ્છમાં 210 ગણતરીદારો કામગીરી કરી રહ્યા છે અને તેમની ઉપર 35 સુપરવાઇઝરો નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે। માલધારીઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હતો કે અમારું પશુ રહી ના જાય કે આજે કચ્છનું માલધારી બનાસકાંઠામાં બેઠા હોય કે સૌરાષ્ટ્રમાં બેઠા હોય તો અમારું ગણતરી કઈ રીતે થશે એ માલધારીઓને ચિંતા હોય, તો એના માટે જ સર દિલ્હીથી આવ્યા છે અને એ જ એક મુખ્ય મુદ્દો હતો માલધારીનો। અને જેને આ વખતે ઘુમંતુ માલધારી એટલે વિચરતા માલધારી સ્થળાંતરિત માલધારી હેઠળ આવરી લેવાશે એટલે કોઈ પણ એમનું પશુ ગણતરીથી રહી ન જાય તે મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો।